Recording now. I hope you can see my slides. So, as I told you, I will consider this today's session, as the lecture session. And then your next session, we will try to make it as a lab session. Okay, so what did we do yesterday? We looked at Gaussian quadrature. In the Gaussian quadrature, we looked at use of legendary polynomials, right? Legendary polynomials. And we found that if we solve legendary polynomials and find their roots, right, the zeros of P2x, they serve as the points, zeros of points of evaluation for Gauss legendary 2-point method, and similarly zeros of P3x, they served as points of evaluation for Gauss legendary 3-point method. So that's very interesting that these points which you are evaluating, they're coming from the zeros because of very peculiar property, -1 to 1, Pnx, Pmx dx equals to 0 when m not equals to n. When m not equals to n, yes, when m not equals to n, and these polynomials we called as orthogonal. Okay, so these are orthogonal. So legendary polynomials are orthogonal. Legendary polynomials are orthogonal on -1 to 1, this interval AB. So they are having this very interesting property, and because of that, we use them. So now, naturally, if we want to extend, then we can ask this question: do we have any other polynomial? Do we have any other such polynomial, like legendary polynomial? Do we have any other such polynomial which can be used? That means, can we use any other polynomial and we can get this Gaussian quadrature or Gaussian integrals? The answer to this question lies in the fact that there are several uh, orthogonal polynomials, orthogonal set of polynomials which are useful. Okay, so there are other polynomials which are used for evaluation of integrals via Gaussian method.
By Gaussian method, I mean Gaussian quadrature. One of those is called Hermite polynomials. एक जिसको टोटल दो हम लोग स्टडी करेंगे. एक लेजेंडरी हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा हुआ है, और दूसरा जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हर्माइट पॉलिनॉमियल्स. सो हर्माइट पॉलिनॉमियल्स क्या होती हैं? हर्माइट पॉलिनॉमियल्स भी ऑर्थोगोनल सेट कंस्ट्रक्ट करती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है लेजेंडरी से. हर्माइट पॉलिनॉमियल जो सेट है, h0x कांस्टेंट फंक्शन है, h1x लीनियर फंक्शन है, h2x क्वाड्रेटिक फंक्शन है, h3x एक क्यूबिक फंक्शन है, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. बहुत सारी है. जो जनरल फार्मूला इनका है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, hn(x) इज इक्वल टू, जस्ट लाइक रॉड्रिक्स फार्मूला, hn(x) इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n e रेज टू पावर x स्क्वायर n बार डिफरेंशिएशन dn ओवर dxn ऑफ e रेज टू पावर -x स्क्वायर. e रेज टू पावर -x स्क्वायर का n बार का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये हर्माइट पॉलिनॉमियल मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल if you put n is equals to 1, तो h1x यहां से देखो कितना मिलेगा, -1 रेज टू पावर 1 e रेज टू पावर x स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर -x स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा, पहले तो -e रेज टू पावर x स्क्वायर मिलेगा, फिर e रेज टू पावर -x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, -2x e रेज टू पावर -x स्क्वायर, which finally will give you 2x, which is same as your h1x, which you have already obtained. All right. So this is for n is equals to 1. Similarly, you can check for other also, for n is equals to 2, and then so on and so forth. So let us check for n is equals to 2. So n is equals to 2 के लिए आपको देखोगे, I will not do it, but you check it later on. h2x करना, उसके बाद वो -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, e रेज टू पावर x स्क्वायर हो जाएगा, d2 बाई dx2, d2 बाई dx2 का मतलब हुआ दो बार डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर -x स्क्वायर, पहले स्टेप में e रेज टू पावर x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ e रेज टू पावर -x स्क्वायर, वो हो जाएगा -2x e रेज टू पावर -x स्क्वायर. इसका फिर दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, फाइनली fill in the gaps, and then you will find that this is nothing but 4x square minus 2. Sorry. So this will come out as 4x square minus 2. So this is what the legendary, this is what the Hermite polynomial you will get. Same as was the case for legendary polynomials, Hermite polynomials are also orthogonal. So orthogonal. If you recall my yesterday's lecture, I defined orthogonality of two functions f and g on AB with a weight function wx, fx, gx, and then we said that if this is 0, then the functions are said to be orthogonal. F is said to be orthogonal on g, right? This is what we said earlier. So orthogonality of Hermite polynomials. Hermite polynomials
are also orthogonal, just like legendary polynomials, they are also orthogonals, but there is a difference here, but with a वेट फंक्शन, यहां पे एक वेट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ई रेज टू पावर वेट फंक्शन, जो हम लोग डब्ल्यू एक्स जिसको बोलते हैं वेट फंक्शन को, बट विद द वेट फंक्शन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल जो यहाँ पे है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे कि वेट फंक्शन आपका ये है और जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, विच मीन्स दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू एक्स की जगह पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, एच एन एक्स एच एम एक्स, दो हर्माइट पॉलिनोमियल्स का अगर इस तरह से प्रोडक्ट लेंगे आप तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा अगर m आपका n के बराबर नहीं है तो, और सेल्फ वाले केस में अगर m n के बराबर है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट पाई 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो दिस इज व्हाट द हर्माइट पॉलिनोमियल्स ऑर्थोगोनैलिटी सेज। तो यहाँ पे ये आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनैलिटी है। एक दो पॉलिनोमियल्स टेस्ट करके देख लेते हैं। सो एग्जांपल, H1 hermite 1 and H2 quadratic hermite are ऑर्थोगोनल। H1 H2 ऑर्थोगोनल है, तो अगर H1 H2 ऑर्थोगोनल है तो क्या होना चाहिए, इस वाले फॉर्मूले में जब हम n इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 2 रख देंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। और H1 और H2 की डेफिनेशन कहाँ से हमें पता है, H1 हमें यहाँ से पता है कि 2x होता है और H2 हमें यहाँ से पता है कि 4x स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। कैसे इसको शो करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो दिस वी हैव टू फाइंड आउट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, although I have shown you the result without proof, e raised to power minus x square, as I told you h1x का वैल्यू क्या है 2x और h2x का वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2 और ये dx, h1x is 2x, h2x is 4x square minus 2. So if we use this formula, this is your h1x, this is your h2x. तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 8x क्यूब माइनस 4x e raised to power minus x square dx. If you notice carefully, this is an even function and this is an odd function. So the product will be an odd function and this limit is minus infinity to infinity. So therefore, this integral value will be 0. So you can easily see that the integral is 0. Okay. So similar way you can check for any function, and this without proof. Without proof, we have given this relationship of orthogonality of Hermite polynomials. So far so good. Schrodinger equation जैसा दिख रहा है, नहीं Schrodinger equation नहीं, Hermite polynomial actually come from the solution of Hermite differential equations. जैसे लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वैसे ही हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये उसके इंटीजर सॉल्यूशंस होते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल्स आर द इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। और
का जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे उसका कैसे होता, क्या होता था डिफरेंशियल इक्वेशन लेजेंड्रे का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस n इंटू एन प्लस 1 ऑफ y। तो वैसे इसमें हर्माइट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है y डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस 2n y इक्वल्स टू 0। इसका जब आप सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे, सीरीज सोल्यूशन, तो वहां से फिर आपको पॉलिनोमियल सोल्यूशन जो होंगे वो हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेंगे। सो दोज विल बी रेफर्ड एज हर्माइट पॉलिनोमियल्स। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं HNX आर द सॉल्यूशन ऑफ, HNX आर सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन से वहां से वो निकल के आते हैं। इज इट 2xy या 2ny? 2ny, लास्ट टर्म जो है 2ny है, 2ny। पहला y डबल प्राइम माइनस 2xy प्राइम प्लस 2ny, यही n आपका यहाँ पे n में आता है। दिस n इज द सेम n, ये जो n है वही n यहाँ पे आता है। लेजेंडरी पॉलिनोमियल में जो Pn में n आता है वो n इंटू एन प्लस 1 की वजह से आता है। All right, I think I can move ahead. So without now getting into the details, we have got the Hermite polynomials, and therefore we can also in the similar fashion as our Gauss Legendre, we can discuss Gauss Hermite rule. Okay, so now let's look at zeros. Zeros तो सभी को पता होगा, जीरो का मतलब होता है रूट्स, zeros of h2x। तो h2x आपका क्या है, 4x square minus 2। h2x is defined as 4x square minus 2, उसको जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। तो आपको x1 मिल जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 और x2 मिल जाएगा प्लस 1 बाई रूट 2। तो x1 और x2 आपके 1 बाई रूट 2 मिल गए। इसका मतलब जो एक फॉर्मूला है, जैसे गॉस लेजेंड्रे वाला फार्मूला था, उस तरह से अगर हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे तो हम 1 बाई माइनस रूट 2 और 1 बाई प्लस रूट 2 पे अब इसके इंटीग्रल्स को निकाल सकते हैं। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कॉशन बताऊंगा कि ये पिछले बार वाले की तरह से नहीं होगा, बट इट इज लिटिल डिफरेंट। सिमिलरली देखिए, तो यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी x1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक तो जीरो आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 12 बाई 8, एट एक्स स्क्वायर माइनस 12 है ना। तो उसमें से हम लोग जो है दो तरीके हैं लिखने के, उसको आप 12 बाई 8 लिखेंगे और उसके बाद में 6 बाई 4 लिखेंगे। 6 बाई 4 में स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई 2, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई 2। ओके, तो हम लोग ये 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। ओके, इस आप भी यही 3 पॉइंट कंसीडर करिएगा। अगर कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे हो सकता है कि इसमें अंडर रूट ऑफ 3/2 लिखा हो, बट आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 3/2 के बजाय रूट 6/2 ही रखना, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सो दैट वी विल नॉट हैव ए कंफ्यूजन एट ऑल। ओके, तो यहां से हमें दो गॉस हर्माइट रूल मिलते हैं। ये फ्रॉम हियर वी कैन जनरेट two Gauss Hermite integral rules, which I will discuss one after the other. Gauss Hermite
क्वाड्रेचर, इसका मतलब गॉस हर्माइट इंटीग्रल रूल। गॉस हर्माइट में क्या है कि लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। सपोज we want to evaluate, suppose we want to evaluate this integral, okay? इस इंटीग्रल में देखो ध्यान देने वाली चीजें क्या है, what are the important things in this integral is that limit is from minus infinity to infinity, that is one important thing, and other important thing is the presence of this exponential factor e raised to power minus x square. So if in any integral you have, and then there is a product of fx, okay, then there is a product of fx. So if in any integral आपके पास में कोई भी इंटीग्रल हो जिसमें e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म आ रहा हो और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, देन यू कैन अप्लाई गॉस हर्माइट क्वाड्रेचर। और गॉस हर्माइट में आपका जो पहला है गॉस हर्माइट रूल 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, देयर आर आल्सो 2 पॉइंट रूल। सो पहला रूल आपका है गॉस हर्माइट टू पॉइंट रूल। इसका मतलब इसमें 2 पॉइंट आप यूज करोगे। कौन से 2 पॉइंट यूज करोगे? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वो जो आपके H2 के जो रूट्स हैं -1/√2 1/√2 उनको यूज करेंगे सबसे पहले। तो गॉस हर्माइट 2 पॉइंट रूल सेज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर fx dx, इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा ये कोएफिशिएंट √π/2 f ऑफ -1/√2, f की वैल्यू -1/√2 पे और f की वैल्यू +1/√2 पे। गॉस लेजेंड्रे में क्या था, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 आ रहा था, यहाँ पर क्या है, ये जो कोएफिशिएंट है ये √π/2 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, फार्मूला याद रखने पड़ेंगे हमें। और f वैल्यू जैसे वहां पे -1/√3 और +1/√3 पे इवेलुएट किया हुआ था, वैसे ही यहाँ पर जो है ये -1/√2 और +1/√2 पे इसको इवेलुएट किया हुआ है। तो आई थिंक कि इट मेक्स सिंपल सेंस नाउ। सेकेंड फार्मूला जो हमारा है इन द पैरेलल टू योर गॉस लेजेंड्रे, गॉस हर्माइट थ्री पॉइंट रूल। 3 पॉइंट रूल आपका क्या है? दैट विल गिव यू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर fx। fx क्या है? e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट है, तो इस तरह का हमारा फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा? सबसे पहले √π/6 बाहर हो जाएगा। λ1 आपको याद होगा, λ0 λ1 λ2 हम लोग लिखते थे, तो बेसिकली ये λ0 है। सो λ0 f ऑफ, इसका रूट हम लोगों ने क्या निकाला था? -√6/2, 0 और √6/2। सबसे पहला इवेल्युएशन कहाँ पे होगा? -√6/2 प्लस इसका वेट थोड़ा डिफरेंट होता था, पिछले फॉर्मूले में भी डिफरेंट वेट था, f0 प्लस f ऑफ √6/2। So these are the two important formulas which are used in case of Gauss-Hermite quadrature. Okay, 2 point फार्मूला और 3 point फार्मूला में ये आपके 2 फार्मूले हैं। ठीक है, 1/√2 कैसे आया? 1/√2 is the solution of Hermite polynomial. Hermite polynomial हमने लिखी ना अभी आपके लिए, so I have written the Hermite polynomial here. 4x² - 2 is the Hermite polynomial H2. इसका जो रूट है
या इसका 0, जहां अगर इसको 0 के बराबर कर दोगे तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी? एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x, h2x will be 0 at x is equals to 1 by root 2 and x is equals to minus 1 by root 2. So they give us the points where we should evaluate the function value for the Gaussian quadrature using Hermite polynomials. Just like as your Legendre polynomial gives you the values at which you should use Gaussian Legendre formula 1 by root 3 minus 1 by root 3. In a similar fashion, you are getting these roots. I hope it makes sense. x1 में माइनस क्या है? All right. So now we will see example. Many of you might recall this integral. Many of might recall this integral minus infinity to infinity e raised to power minus x square dx. Calculus may probably you might have studied. So first I will quickly find this integral using your calculus course. So you know that change of variable does not change the integral if the limits are constant. So you can write, because these are the dummy variables, you can write it as e raised to power minus y square dy. Then you can insert one integral inside the other so that you will get I square is equals to double integral minus infinity to infinity e raised to power minus x square into e raised to power minus y square dx dy. Now this integral you can figure out, it's a double integral, which is e raised to power minus x square plus y square. So you can convert it using your polar coordinate. You can write x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, so that you will get I square is equals to integration from minus infinity to infinity, integration from minus infinity to infinity, e raised to power minus r square, because minus of x square plus y square, dx dy. When you change from Cartesian to polar, then your area strip dx dy goes to r dr d theta. You might recall that. So this becomes r dr d theta. Now you can use the iterative integrals, because these integrals can be evaluated iteratively. So the first integral will become minus infinity to infinity. This integral e raised to power minus r square r dr, this can be evaluated by putting r square is equals to u, so that r dr is equals to du by 2, correct? Du by 2. So it will be finally minus of e raised to power minus u by 2 integrated between minus infinity to infinity. Sorry, I made a mistake here. These limits will change when you convert from Cartesian to polar. These limits will change. So you have converted this minus infinity to infinity. So better let us make this precise. So we, okay,
this will create a little trouble. Okay, so the easiest way of dealing with it is you can write it as 2 times integration from 0 to infinity e raised to power minus y square dy. Okay, so therefore I square will be 4 times integration from 0 to infinity. Make this 0 to infinity, that will make your life simpler, otherwise it will be difficult. Okay, so this will make it 0 to infinity, 2 times 0 to infinity, 2 times 0 to infinity, then you change to polar coordinates. So in that case, what will happen, x is varying from 0 to infinity, y is also varying from 0 to infinity. That means this is the total region which is being covered by this integral I square, है ना? So I square is actually represented by 4 times this integral. So this star is nothing but this area here. Now, how will I cover it in polar coordinates? So assume that this is any point. Assume that this is any point r comma theta. So in order to cover the entire region, you can see that r will vary from 0 to infinity in order to cover it, and theta will vary from 0 to pi by 2. So theta is equals to 0 to pi by 2, r is equals to 0 to infinity. If you take that, then you will cover the entire region. So theta will vary from 0 to pi by 2, and r will vary from 0 to infinity. And this is how you will get that. Now you use the iterative integral. So here again you will get that one. This is 0 to pi by 2, and this is e raised to power minus u by 2 with a negative sign, 0 to infinity d theta, which finally give you e to power minus e raised to power minus u. When you substitute infinity, it will give you 0 minus of 1 by 2. So you'll get 1 by 2 integration of 0 to pi by 2 d theta, which will give you pi by 2. So eventually you will get pi by 4. So I square 4 is also there. This 4 is also there. This 4 is also there. This 4 is also there. So eventually your I square is equals to pi. Therefore I is equals to square root of pi. This we have studied in our calculus, that this value is root pi. I hope this is all right. E to the power -4 कैसे हो गया? -4 नहीं है, माइनस u है. Choose u is equals to r square. डबल इंटीग्रल नहीं था सिलेबस में. ओ, so this is basically iterative integral. We have not used any bigger idea for double integrals. If it was not there, then it's okay. So this is the integral which comes. So you can see if it is not there, and from any book also you can see this is a very popular. Sorry, this is a very popular integral. Some of you might have seen this integral already. Just, oh my goodness.
Yes, my PowerPoint crashed and everything is gone now. So all our slides are gone. Just give me 1 minute to see if I can retrieve it. Please wait for a minute. Okay, so fortunately I could retrieve maximum. Just give me 1 more minute. There is some issue I am facing. All right, so I could retrieve my, yes, but still, I could retrieve it and I got maximum content only up to this point. I lost my other content. That's all right. So let's look at this. So, okay, uh, I'll make it simple, but since you have not studied, therefore probably you are having trouble. So suppose you have to use this integral I is equals to minus infinity to infinity. So instead you can definitely write it. This is very easy, right? Writing 0 to infinity e raised to power minus x square dx. इसमें तो कहीं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, इवन फंक्शन है, 2 बार करके हमने उसको वो कर दिया. ठीक है. अब क्या है कि डमी वेरिएबल होता है x जो इंटीग्रल है, इसको 2 बार आप ये भी लिख सकते हो, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, ये भी लिख सकते हो. यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. i की वैल्यू इंटीग्रल में कांस्टेंट है, तो इसलिए i की वैल्यू कांस्टेंट आएगी. ये तो कॉमन सेंस है, करेक्ट. अगर इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट होती हैं तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही आएगी. जब तक वेरिएबल लिमिट नहीं होगी तब तक तो वेरिएबल वैल्यू आएगी नहीं. तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहें तो आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर को हम आई टाइम्स आई लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं. एक आई की जगह पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रल लिख लेते हैं, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. ये तो इंटीग्रल हो गया. और दूसरा आई अंदर रख लेते हैं, बिकॉज इट्स कांस्टेंट, तो इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, तो क्या ही प्रॉब्लम है. अब वो जो दूसरा आई है उसको भी आप क्या कर दो, इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो. तो 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी ऐसे पहले से ही बना था, और ये वाला जो आई है इसको मान लो रेड कर लो, ताकि हम इसको रेड इंटीग्रल में रिप्रेजेंट कर लें. तो ये इंटीग्रल में लिख दो, तो 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका dy है, और वो dx वहां पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से प्रेजेंट था. ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, और इसका वाला dy भी आ जाएगा साथ में. तो दोनों लोग एक साथ बैठ करके dx dy हो जाएंगे. नाउ दिस इंटीग्रल गेट्स इनटू, बिकॉज x and y are independent of each other.
तो ये 2 टाइम्स भी आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा टोटल। तो ये 4 टाइम्स इंटीग्रल हो जाएंगे अब 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल्स हैं तो प्रोडक्ट होंगे तो जुड़ जाएंगे, और dx dy, ये डबल इंटीग्रल बोलते हैं इसको, कि ये डबल इंटीग्रल है। सो दिस द आइडिया ऑफ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा कुछ भी उसमें जो है, अगर मान लो फंक्शन 1 है तो वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स डबल इंटीग्रल dx dy एरिया रिप्रेजेंट करेगा, बट किसी फंक्शन के साथ में है तो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हाट आई वाज मेंशनिंग हियर कि ये जो है dx dy जो है स्मॉल एलिमेंट होगा ना, dx dy, तो ये क्या हो गया, ये एरिया स्ट्रिप हो गई ना, छोटा सा एरिया। तो ये क्या बता रहा है कि ये x की वैल्यू आपकी 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, और ये बता रहा है कि x की वैल्यू आपकी 0 से इंफिनिटी तक जा रही है। दैट इज हाउ यू आर कवरिंग द एंटायर डोमेन, 0 टू इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या है, अगर 0 टू इन्फिनिटी करेंगे तो आप कितना एरिया कवर कर लेंगे? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो एक्स एक्सिस का है वही तो कवर कर रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी। दैट इज हाउ द dx dy इज कवरिंग। बट इस तरह से हम इसका एरिया निकाल नहीं पाते, तो हम इसको क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पोलर में x इज इक्वल्स टू r cos थीटा रखते हैं, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा रखते हैं, और जो एरिया एलिमेंट होता है, अगर आप ये नहीं आता है तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे ही जो है वो रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस डेरिवेशन विल बी लिटिल लॉन्गर। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो dx dy जो है r d थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये जो पूरा इंटीग्रल है वो 0 से इन्फिनिटी, 0 सॉरी अगेन मैं सेम मिस्टेक कर रहा हूँ, जो पूरा इंटीग्रल है वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर और डी थीटा में बदल जाएगा, जिसको हम लोग दोबारा इटरेटिवली इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे हमने किया था ना पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। वो कैसे पता चला हमें? यहाँ से पता चलेगा। आर थीटा जो है वो कोई पॉइंट है, ये अगर पॉइंट एक्स कामा वाई कार्टेशियन में है तो करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आर थीटा पोलर में है। अगर हमको ये पूरा का पूरा रेड कलर का एरिया कवर करना होगा तो आर हमें 0 से इन्फिनिटी कवर करना होगा, और थीटा में 0 से π/2 कवर करना होगा। आर 0 से इन्फिनिटी कवर करना होगा, और थीटा 0 से π/2 कवर करना होगा। आप एक बार अलग से कहीं प्लॉट करके देख लो। ये वाला पॉइंट मान लो आर थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा होता है और ये डिस्टेंस आर होती है। तो आर अगर 0 से इन्फिनिटी अगर मान लो कवर कर रहे हो, तो मान लो ये वाला पूरा है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और थीटा को अगर 0 से π/2 कवर करोगे तो वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस पूरे के पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर देंगे। नाउ ये इंटीग्रल निकालना तो बड़ा आसान है, इसको आप अलग से इवेल्युएट कर सकते हो। एवरीवन शुड बी एबल टू इवेल्युएट दिस वन। सिंगल इंटीग्रल तो सभी को निकालना आता होगा ना, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, इसका इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी के बीच में कैसे निकालोगे? सिंपल सा चीज है, आर स्क्वायर की जगह पे माइनस यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस यू, और ये बन जाएगा डी यू बाई 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आर अगर 0 है तो यू भी 0 होगा, आर इन्फिनिटी है तो यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2। So this value you substitute here, integral 0 to π/2 1/2 d theta। d theta का इंटीग्रल बहुत सिंपल है, this will become π/2, so eventually the whole integral will become pi। तो i स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी हो गई है वो पाई अगर आ गई है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? √π। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ जाना चाहिए, अब शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया है। So I hope it should be clear now। लिमिट π/2 कैसे है, एक बार फिर से 79%, दैट्स परफेक्ट। तो आपका एरिया जो कवर हो रहा है वो कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर करने के लिए क्या है, जैसे मैंने बताया, आर तो आपकी वैल्यूज कहाँ से, यहाँ से शुरू होंगी और ये सारी की सारी अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगी। और थीटा देखो कहाँ से शुरू होगा, थीटा का तो पहली वैल्यू जो आएगी आर को, आपको सारी की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, फिर सारी वैल्यू यहाँ पे, फिर सारी वैल्यू यहाँ पे, फिर सारी वैल्यू यहाँ पे, फिर आर की सारी वैल्यू यहाँ पे, फिर आर की सारी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये जो लाइन रेडियल लाइंस में बना रहा हूँ, ये कौन कौन से एंगल की हैं?
थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. That's why theta is from 0 to pi by 2. Okay. नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं. Eventually at the end of the day the story is the integral of this value is root pi. इसकी वैल्यू रूट पाई होती है. वो मेरा पॉइंट है बस. केवल मुझे लगा ये आपको पता होगा इसलिए मैंने इसको यूज किया. ठीक है, नहीं भी पता है कोई बात नहीं. So now we will consider this as an example. हमें पता है उसकी वैल्यू रूट पाई होती है, but say we want to evaluate, find I. Question is find I is equals to minus infinity to infinity e raised to power minus x square dx. मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, इसको फाइंड करिए. तो हम क्या करेंगे, पहले गॉस हर्माइट 2 पॉइंट. इसमें देखें गॉस हर्माइट 2 पॉइंट लगा सकते क्या. सबसे पहली टेस्ट क्या था उसमें कि लिमिट्स आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होनी चाहिए और ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स जैसा फंक्शन होना चाहिए. सो इफ वी चूज हियर, इफ वी चूज एफ एक्स एज कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिकली 1 ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. पूरे डोमेन पे इसकी वैल्यू 1 है. तो अगर हम लोग एफ एक्स को 1 चूज कर लें तो यहाँ पे ये वाला लग जाएगा. करेक्ट. So I can write this as minus infinity to infinity e raised to power minus x square into 1 dx. 1 क्या है हमारा, fx हो गया. 1 हमारा fx हो गया. तो गॉस हर्माइट 2 पॉइंट जो रूल है वो क्या कहता है, इसकी वैल्यू रूट पाई बाई 2 टाइम्स f वैल्यू at minus 1 by root 2 plus f value at 1 by root 2. बट f आपका क्या है, देखो तो कांस्टेंट फंक्शन है, बट fx is 1 for all x. हर एक x के लिए अगर 1 है तो ये इसके लिए भी 1 होगा और इसके लिए भी 1 होगा. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 plus 1 that is 2. So the total value will be under root pi. तो e raised to power माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स जो इंटीग्रल वैल्यू है वो आपका देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रूट पाई आ जाएगा. तो इसका मतलब यू कैन इवेल्युएट दिस और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे अगर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल, 1.7724. तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7724. सिमिलरली सपोज इफ यू वांट टू अप्लाई गॉस हर्माइट 3 पॉइंट रूल, अगर आप गॉस हर्माइट 3 पॉइंट रूल लगाना चाहते हैं, सपोज इफ, देन आल्सो यूज द सेम वे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 dx. उसका फार्मूला क्या होता है, रूट पाई बाई 6 f ऑफ माइनस रूट 6 बाई 2 प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस f ऑफ रूट 6 बाई 2. Now again as I told you, fx here is 1 for all x. हर एक x के लिए अगर 1 है तो इसकी वैल्यू f at माइनस रूट 6 बाई 2 भी 1 होगी, f at 0 भी 1 होगी, f at रूट 6 बाई 2 भी इसकी वैल्यू 1 होगी. सो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो निकल करके अब कितनी आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी रूट पाई बाई 6 इंटू 1 प्लस 4 टाइम्स 1 दैट इज 4 प्लस 1 that is equals to root pi. Again root pi की value 1.7724. So this is our numerical value by Gauss Hermite 2 point or Gauss Hermite 3 point. In both cases we have found that it is coming out to be exactly value. All right. तो ये तो बहुत simple example था. Let us take one more example where fx has some non-trivial value. So example, now we are going to consider find I is equals to e raised to power minus x square over 1 plus x square minus infinity to infinity. सबसे पहले कोई भी dx
कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा वो फार्मूला उसमें एप्लीकेबल है या नहीं. So here also the limit is from minus infinity to infinity and exponential of minus x square is there. So in this case we can easily understand that fx is nothing but 1 upon 1 plus x square. fx की जो वैल्यू है 1 upon 1 plus x square. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? We can apply Gauss Hermite. पहले 2 पॉइंट लगाते हैं, 2 पॉइंट रूल. गॉस हर्माइट 2 पॉइंट रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका एफ एक्स है, dx. ये आपका क्या है? एफ एक्स है. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लीज नोट इट केयरफुली. स्क्वायर रूट पाई बाई 2, फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 पे 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस फंक्शन की वैल्यू 1 बाई रूट 2 पे 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर. ये समझ में आया? एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 पे, एफ एक्स की वैल्यू प्लस 1 बाई रूट 2 पे. ठीक है. मेक इट ए हैबिट टू कैलकुलेट द वैल्यूज एट दीज पॉइंट्स मैनुअली. वैसे तो यहाँ पे यू कैन डू द कैलकुलेशन मैनुअली आल्सो हियर, but make a habit of doing the calculation using calculator. For example, here you can easily see it is nothing but 2 by 3, right? And this is also nothing but 2 by 3, so total will be 4 by 3. So that way you can calculate, right? But when you calculate it numerically, you will get it as root pi. I told you the value of root pi is 1.7724. So root pi by 2, जो उसका वैल्यू आपका आएगा 0.8862. And then this is like 0.6667 plus 0.6667, I think, and this is what you will get finally, 1.1816. So this is the value which you will get finally. दूसरा है कि अगर हम लोग क्या करें, गॉस हर्माइट 3 point rule apply करें. If we apply the 3 point rule, everything remains the same, only calculation will differ. It will become minus infinity to infinity e raised to power minus x square 1 upon 1 plus x square dx. ये क्या हो जाएगा? रूट पाई बाई 6 आ जाएगा इस केस में यहाँ पर, और ये बन जाएगा 1 upon 1 plus minus root 6 by 2 whole square plus 4 times 1 upon 1 plus 0, that is 1 रहेगा, और 1 upon 1 plus root 6 by 2 whole square. जब आप न्यूमेरिकली ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यूज द कैलकुलेटर. न्यूमेरिकली व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यूज यू विल गेट 1.4179. You can check the calculation, and if you have a question you can tell me. ठीक है. So yes, we can round off. Yes, absolutely, naturally we can round off. See, it depends on the accuracy, like what accuracy do I need? Okay, so, and that's why I tell that it's better to use the whole value in calculator. Like in calculator you write 1 upon 1 plus this bracket minus of root 6 by 2 whole square plus
another term plus another term into root pi by 6. Whole calculation you do in one go in calculator. So calculator will itself do some kind of approximation. That's why you will get the best result when you do the whole calculator in one go. But if you write first step, second step, third step, sum them together, then multiplied by root pi by 6, then what you are doing is that you are rounding off. So rounding error will come more in that case. It is advisable to use calculator from this step itself. यहाँ पे ही पूरा का पूरा calculator use करिए, then you will get the best possible value. एक एक्सरसाइज 11:10 हुआ है और 11:20 तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद में मैं सोल्यूशन दे दूंगा. So one exercise I will give you. It is example, but let us consider it as an exercise. I is equals to, it's not difficult, minus infinity to infinity, e raised to power minus x square over 1 plus x square dx. इसको आपको गॉस हर्माइट टू पॉइंट रूल और गॉस हर्माइट थ्री पॉइंट रूल से करना है. 11:20 पे मैं 11:20 से पहले मैं सोल्यूशन सारे इसके नोट डाउन कर दूंगा. आंसर बता देता हूं आपको. इसका आंसर आएगा 1.51924 और इसका आंसर आएगा 1.49 1.49260. ये आंसर्स आने चाहिए आपके. ठीक है. If you want, I can show you the formula. If you have noted down the question, then I can show you the formula slide. Or I can bring the two slides together. So now I hope you can see both the formula slide and question.
Okay, Ronit has 1.52. Okay, that's fine. That is happening. The mismatch is happening because of the value of the pi. I have taken root pi from the calculator directly, and you have taken root of 22/7. In the calculator, there is a pi value directly you can choose root pi. So from there, you can choose root square root function and then pi function. You can choose both of them. By the way, do you know that you also have the scientific calculator in your mobile phone? So if you don't have scientific calculator at the moment, you can use your mobile phone also. There is scientific calculator. If you expand that calculator, it will become scientific calculator. Correct. Yes, that's correct, right? 1.92। विक्की थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 1.51 देखो सभी का लगभग आ रहा है। राहुल 1.43 किसका है ये 1.43? अगर ये 1.43 पहले का है तो गड़बड़ है। और सो मैनी देखो कुछ लोग सोल्यूशन शेयर करें। 1.51 शेयर किया हुआ है अभी, है ना? तो लुक एट द सोल्यूशन इफ इट इज नॉट मैचिंग। Okay, 1116 is already there, so I think I should write it, and then you check where you have committed the mistake. Okay, and you should not commit the same mistake during examination. Look at the solution now. I'm writing the solution now. Please have a look at it. So here clearly fx is, many of you have identified, fx is 1 plus x square. So 2-point method will give you minus infinity to infinity e raised to power minus x square 1 upon 1 plus x square dx. First thing first, root pi by 2. 1 upon 1 plus minus 1 by root 2 plus minus 1 by root 2 whole square plus 1 upon 1 plus 1 by root 2 plus 1 by root 2 whole square. As I told you, all these values should be done using calculator. So when you write using calculator, it will come 1.7724 by 2 bracket 1.26120 plus 0.45308, which will give you approximately 1.51924 or anything of this vicinity. Okay, any number which is coming closer. So if your numbers are not matching, then you try and check whether they are not matching at the first value, whether they are not matching as the second value, where they are not matching. Okay, you should check that. Similarly, Gauss-Hermite 3-point minus infinity to infinity e raised to power minus x square 1 upon 1 plus x square 1 plus x square dx will give you square root of pi by 6 1 upon 1 plus minus root 6 by 2 plus minus root 6 by 2 whole square plus 4 times this minus, actually minus root 6 by 2 whole square plus 4 times f of 0 is actually 1 plus 1 upon 1 plus root 6 by 2
only root 6 by 2. Root 6 by 2 plus root 6 by 2 whole square. This value, you will find that it turns out to be 0.29541. Inside the bracket, the first entry will be 0.78416 plus 4 plus the last entry 0.26848 bracket close, and this whole value will come out to be 1.49260. These what the numbers are. Okay, so please check your numbers if they are not matching somewhere. All right, so this is what. Okay, so now this is the summary of whatever we have done so far. So we had the integral of the form a to b fx dx, for which we have used Newton-Cotes methods. Among the Newton-Cotes method, we have used trapezoidal, we have used Simpson's. These methods, they have equispaced points. The number of points were already fixed, right? So you have equispaced points. You have evaluation at every point. So more number of evaluations, and your accuracy increases as n goes to infinity, means n becomes larger, the number of partitions becomes larger. Whereas this particular, we have Gaussian quadrature. Within the Gaussian quadrature, we have found that this for two different kind of methods. One was Gauss-Legendre. These methods we have studied. What was the important thing about the Gaussian quadrature was that we have to evaluate these values at predefined points. Gauss-Legendre में भी हमको पहले जैसे पता था 1/√3 -1/√3 पे ही हम केवल इवेल्युएट कर सकते हैं, और या Gauss-Hermite, where the integral is a special kind, e raised to power minus x square जो है उसका फंक्शन fx का जो है वो पार्ट होता था. It is a special kind of function, but still it can be considered as e raised to power minus. So in both the cases, you have predefined points, less number of evaluation. जो functional evaluation है वो क्या है? Less number of evaluations हैं, और with higher accuracy, आपकी better accuracy के साथ मिल रहा है. So these functions they were advantageous in those specific kind of ways. So we have studied so far these methods, and this is the whole summary of all the methods which we have studied. Okay. Now we will get into the double integral. Some of you are told that you have not studied.
So try to focus on only what I am discussing. So we'll just discuss one single method of double integral. Okay. So like in single integral, what do you see here is that if there is any function fx, then integration from a to b of fx dx वो क्या रिप्रेजेंट करता था, a से b के बीच में जो डोमेन है उसके और फंक्शन के बीच का एरिया. ठीक है. डबल इंटीग्रल उसी तरीके से देखोगे तो क्या करेगा, ये मान लो आपके एक्सिस हैं, तो जो फंक्शन वैल्यू है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d के बीच में, ये रेक्टेंगुलर डोमेन हो गया. ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू b, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू c, और ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू d. सो जब हम 2 डायमेंशन में देखेंगे, व्हेन वी सी इन द 2 डायमेंशन, ये इस तरह का दिखेगा रेक्टेंगुलर शेप्ड रीजन a b c d, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे है. And corresponding to each value here, this is the value of fxy, because here it is varying. So this is the surface now. These are the values. So these values are given as surface fxy. बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल इंटीग्रल a to b c to d, फर्स्ट लिखना पड़ेगा हमें, a to b fxy dx और c to d. ये ऑर्डर होता है हमेशा, पहले मतलब x के रिस्पेक्ट में, फिर dy. तो ये जो इंटीग्रल है I डबल इंटीग्रल, बेसिकली व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम विच इज कवर्ड हियर अंडर द सरफेस. So it essentially represents this volume under the surface. So this volume is represented by this integral I. Volume under the surface fxy within a domain x is equals to a to b and y is equals to c to d. x a से b के बीच में, y c से d के बीच में, इसके बीच में जो है ये आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है. तो अगर ये हमें न्यूमेरिकली इवेल्युएट करना हो, it's not very difficult to evaluate it numerically. We can evaluate it numerically. So हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेपेजॉइडल जो मेथड है हमारा, वो यूज करेंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा डोमेन देखो तो कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू a से b and y is equals to c to d.
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। So earlier also trapezoidal rule h is equals to b minus a by n, तो यहां पर वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं, h is equals to b minus a by n, और k is equals to क्या होता था, ये पहले तो नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे जो कि दो एक्सिस हैं तो हम k कर देंगे d minus c by m। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस m and n आर m n, ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टीशंस हो जाएंगे। टू मेक अवर लाइफ सिंपलर अभी हम चूज कर रहे हैं, m को भी 1 चूज कर रहे हैं और n को भी, बोथ m एंड n हम 1 चूज कर रहे हैं। तो हमारा h क्या हो जाएगा, b माइनस a, और k क्या हो जाएगा, d माइनस c। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको यूनिट पार्टीशन में पूरा का पूरा चेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। सो इंटीग्रल i की जो वैल्यू है वो क्या है, c से d, a से b, fxy dx dy। जैसे मैंने बताया इटरेटिव इंटीग्रल हमें करना है, वी विल इंटीग्रेट देम इटरेटिवली। तो अभी क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग वी कैन think of integrating only the integral of fxy, so forget about y term here। ये इंटीग्रल आप इस यहां से, क्योंकि y के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही कुछ भी वैल्यू, सो यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट y, और इसकी जगह पे फाई x लिख सकते हैं fxy की जगह पे। ओके, सो अगर फाई x रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a टू b फाई x dx। जब h इज इक्वल्स टू आपने चूज किया है, व्हेन यू हैव चूजन h इज इक्वल्स टू b माइनस a, h इज इक्वल्स टू b माइनस a चूज करने पे फाई x dx, ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, एनीबॉडी रिमेंबर्स, ट्रेपेजॉइडल रूल में that will become h into sum of the parallel lines, that will be phi at a plus phi at b divided by 2। this is what the trapezoidal rule says। phi a, phi x आपका क्या है, fxy, तो phi a क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा h by 2 f at a comma y plus f at b comma y। ये वैल्यू आ गई फाई इंटीग्रल फाई एक्स वाई, जो आपका ये इंटीग्रल है, यही तो इंटीग्रल है जो फाई एक्स वाई है, दिस इज द सेम इंटीग्रल। इसकी वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, ये बन जाएगा सी टू डी h by 2 f of a y plus f of b y dy। इसको आप फाई वाई की तरह से सोचिए, नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी अगेन। सो यू कैन राइट h by 2 तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, और यहां पर आप क्या लिखोगे, k d माइनस सी, k सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो इसकी वैल्यू पहले y, दिस फंक्शन की वैल्यू d पे, फिर इस फंक्शन की वैल्यू c पे, तो f of a y at c, f of b y at c plus f of a y at d plus f of b y at d, sum of the parallel lines divided by 2। this value will give me hk by 4 into f of ac plus f of bc plus f of ad plus f of bd। ध्यान से देखोगे तो ये सारे कौन कौन से पॉइंट हैं, AC, BC, AD, BD कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, और H की वैल्यू आपको पता है और K की वैल्यू पता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन so example, suppose you have to evaluate the integral 1 to 2
1 upon x plus y dx dy। अगेन लिमिट्स कांस्टेंट है इसलिए इटरेटिव यूज कर सकते हैं। लिमिट्स आर कांस्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिट कांस्टेंट है उसी वजह से आप यहाँ पे इटरेटिव यूज कर सकते हैं कि पहला इंटीग्रल जिसको भी इंटीग्रेट करना उसको आप पहले और बाद में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हियर दिस बिकम्स आवर fxy फंक्शन, so I can use this iterative integral and then I can get this formula. So eventually I can directly write the values from the formula. Okay, I will make it a little larger for you. So I का वैल्यू देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, I is equals to h के, सबसे पहले तो h हमें निकालना था, h is equals to b minus a, h is equals to b minus a, 2 minus 1 1, और k is equals to कितना है, ये भी c d minus c, 2 minus 1 1, so both h and k are 1 here. So आप रखोगे h k की वैल्यू तो ये होगा 1 into 1 by 4 f of first ac 1 upon 1 plus 1 plus bc, x is equals to b, y is equals to c, 1 upon x is equals to a, y is equals to d, plus 1 upon x is equals to b, y is equals to d। कैलकुलेशन करके देखोगे इसका वैल्यू 0.35425 आएगा। दिस इज व्हाट द इंटीग्रल इज। ओके, सो आई वुड हैव कैरीड ऑन दिस फर्दर। अभी तो हमने सिर्फ एक ही पार्टीशन किया है, वी कैन मेक मल्टीपल पार्टीशन। We can choose n is equals to 2. If we choose n is equals to 2, then उसके जो है, how will it look like? The domain will become like this. We are making two partition. So it will become a, b, और बीच का point a plus h. H is the width here. H is the width here. Similarly here this will be c, c plus k and d. So फिर से आप ट्रिपेजॉइडल लगाओगे हर एक पे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वन। सो यहाँ पर ट्रिपेजॉइडल लगाओगे तो 4 पॉइंट पे ये वाला वैल्यू इवेलुएट होगा, ठीक है। और जब आप इस वाले में ट्रिपेजॉइडल लगाओगे तो ये वाला एक बार इवेलुएट होगा, फिर ये वाला इवेलुएट होगा, ये इवेलुएट होगा, ये इवेलुएट होगा, तो ये 2 बार हो गया अभी। फिर जब ट्रिपेजॉइडल आप इस वाले में यूज करोगे तो ये देखो ये 2 बार इवेलुएट होगा, ये एक बार इवेलुएट होगा, ये इवेलुएट होगा। नाउ दिस पॉइंट विल बी इवेलुएटेड 3 टाइम्स। एंड जब लास्ट वाले में लगाओगे तो ये 2 बार इवेलुएट होगा, ये एक बार इवेलुएट होगा, यहाँ पर एक बार ऑलरेडी इवेलुएट हो चुका था, ये टोटल 4th टाइम्स। सो यू विल सी दैट AC पे वैल्यू जो फंक्शन वैल्यू अभी तक आपकी जो है FAC बन के आ रहा था ना फार्मूले में, FAC, FBC, FAD, FCD, ये सारे वैल्यूज अब आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ से AC पे आएगा A plus H comma C, B comma C. So these are the points where the value will be evaluated. So AC पे एक बार होगा, A plus H comma C पे 2 वैल्यूज है, उसका वेट बढ़ जाएगा। BC पे एक बार होगा, यहाँ पर 2 बार इवेल्युएशन है, तो फार्मूले आपके चेंज हो जाएंगे। Not writing that one, I'm referring you to the book. You can read the book Double Integral by Crazy Book, and then not going to discuss it further. Okay, but it's not very difficult to understand. So the weights will keep on increasing and it will become more and more complicated. That's what it is going to happen. So we will consider only this much content for our today's class. If there is a question, I will address it. Otherwise, we'll stop here. I guess there are no questions, so I should stop recording. Perfect. Good.